सो एथिक्स रे बेसिकली आमे कोन डिस्कशन करू छे कि ह्यूमन एक्शंस कहि परिबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एक्शंस एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन हु कैन टेल दैट आमे मझरे मझरे आमे गोटे शब्द व्यवहार करू ओडिया रे जाको आमे कहू मनीष पणिया करू कि नै सर ता माने कि जणे मनीष ठू कोन कोन एक्शंस हमें एक्सपेक्ट करि परिबा कोन केमिति बिहेवियर हमें एक्सपेक्ट करि परिबा करेक्ट एबे फॉर एग्जांपल आमे कहिबा कि एम्पैथी देखाओ सिंपैथी देखाओ आउ वृद्ध लोकन को सहाय्य करो किंबा वृद्धां को सहाय्य करो एगुडा कोन दीज आर ऑल एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ता माने आमे जेहेतु कहू कि पृथ्वी रो सबुडु श्रेष्ठ प्राणी सीट पाई आमठू एक्सपेक्टेशंस भी बहुत अधिक तो kindness compassions so these are all actions of human sympathy also sir sympathy empathy honesty integrity compassion love all of these things are actions of human कोटे मनीष ठू हमें कोन एक्सपेक्ट करि परिबा बट ह्यूमन एक्शंस कोन ह्यूमन एक्शन जो एक्शंस ता हमें करूचे वर्सेस कोन करिवा दरकार बुझि परछो क्लियर हैला what is human actions the actions what we do and what is actions of human the actions which are ought to be done माने गोटे मनीष ठू कोन एक्सपेक्ट जाई पारे अच्छा बाद में मत गोटे कथा कुह कि जेतोळे हमें गोटे ह्यूमन एक्शंस नो सपोज तमे गोटे जिल्ला रो मे बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेचो किबा मे बी तमे को गोटे जगह रे ब्लॉक रो बीडीओ ऑफिसर हेचो तमे कोनोसी किबा तमे पर्सनल लाइफ रे भी इफ यू लुक इनटू इट ओके एटा एथिक्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कने तुम फ्यूचर रे तुमरो सब्जेक्ट ये चैप्टर गुडा अछि कि एथिक्स इन पब्लिक रिलेशंस एंड एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस अछि चैप्टर तुमरो पढिबा को एटा खाली इमति नजे सिविल सर्विस रे ही काम दबो पर्सनल लाइफ रे भी बहुत काम दिए एथिक्स पेपर ता सो अबे ह्यूमन एक्शंस जने जेतोळे नबो केतोळे नबो ह्यूमन एक्शंस गोटे व्यक्ति जेतोळे नबो केतोळे नबो सिचुएशन देखि हाँ लेट मी मेक इट सिंपल सपोज मु डिसाइड करले मु पिला को पढेबी तार अर्थ कोन आई एम टेकिंग एन एक्शन टू टीच पीपल सो एठु हमें जानिबा कि कोन कोन एलिमेंट अछि व्हाट आर द एलिमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ह्यूमन एक्शन माने गोटे व्यक्ति जेतोळे गोटे एक्शंस निये एक्शंस रो अर्थ बुझि परछो किछि भी जेतोळे हमें इनिशिएटिव नबा कोन कोन इनग्रेडिएंट अछि कोन कोन इंस्टेंसेस अछि जाको बेसिस करी के हमें एक्शंस नबा प्रथम इंस्टेंसेस कोन देखो मु आज तुमको पढौची बिकॉज़ आई फील आई हैव द नॉलेज तार अर्थ इमति बहुत सारा सिचुएशन तुम निजे देखिथिबो फॉर एग्जांपल तमे घरे अछो तुमको कुहा गला कि लेट्स से टेलीविजन रो गोटे मे बी एलईडी तमरो जो टीवी अछि कि मोबाइल स्मार्टफोन अछि तार मदरबोर्ड खराब हो जायछि तमे कोन करिवो तमे निजे ताको खोली के ठीक करिवो ना दुकान को लेके जीवो ऑब्वियसली तमे दुकान को लेके जीवो दुकान को हां तमे जीए से जो स्मार्टफोन जे मैकेनिक अछंती इंजीनियर अछंती तमे ता पाखो लेके जीवो काहे के काहे कि ना ता ऊपर हमर नॉलेज नाही तो हमें ता ऊपर किसी एक्शंस नहीं परिबानी सो नंबर 1 होची नॉलेज सो ह्यूमन एक्शंस हमें सेतबळे नबा जेतबळे हम तांको ऊपर ने सेही सब्जेक्ट ऊपर किबा सेही सिचुएशन ऊपर मोर नॉलेज थिबो नंबर 1 ठीक अछि नॉलेज अछि पण खाली नॉलेज सफिशिएंट पण खाली नॉलेज सफिशिएंट बिल्कुल नुह विल पावर भी थिबा दरकार एबे बहुत लोकन पाखरे बहुत नॉलेज अछि बट इच्छा न थाए जदि इच्छा नाही नॉलेज रो काम कोन सो नेक्स्ट होची तमरो विल पावर निहाती दरकार बिना विल पावर रे किछि भी हे परिबोनी सो नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी बट अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज विल पावर सो नॉलेज एंड विल पावर निहाती दरकार कोनोसी एक्शंस नबा पाए किसी व्यक्ति को पाखरे नॉलेज थाए बट विल पावर न थाए तो से माने कहबे जे नाही मु काई करबी छाड़ से माने जानि से माने करि पारिबे बट से मानकर करिबा पई इच्छा नाही एट द सेम टाइम किछि विल पावर थिबो बहुत से माने फॉर एग्जांपल तमे चाहू छ कि नाही मु किमती वयस हे जीवी
बट तमे वर्तमान कोन करूछ नॉलेज को एक्वायर करूछ सो विल पावर विदाउट नॉलेज इज आल्सो नॉट पॉसिबल किंतु कोन खाली सेति की ना या सहित आउरी भी गोटे जिंस अछि आ सेटा कोन सेटा होची कोन चॉइस चॉइस व्हाट इज दैट गोटे हला नॉलेज गोटे हला विल पावर आ गोटे होची चॉइस see when you take a decision in personal life or professional life these three things are very important to take that human actions knowledge thai pare tomo pakhare इच्छा भी थाई पारे बट व्हाट चॉइस डू यू हैव सपोज मो पाखरे दुईटा तीनटा चारटा प्रकार चॉइस अछि मु को चॉइस टा नेबी नो कंफ्यूजन केतळ होय तुम जानि छो मु आई थिंक स्टूडेंट्स को सब बळे गोटे जिंस कथा कुहे कि लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट नो एटा तो बहुत इजी ही थांदा जदी हमें जानि छे ना एटा ठीक आ एटा भूल आ गोटे जिंस सिलेक्ट करिया पे बहुत ही इजी राइट सब बळे हमें कोन सिलेक्ट करिया बिकॉज़ man means human beings are pleasure seeking people we seek pleasure and we avoid pain सेटा गोटे माने एटा मु बोली नो इट्स सेड बाय एरिस्टोटल इटसेल्फ सो एथि पय एरिस्टोटल आ गोटे भी जिंस कहछन जे men are selfish आमे सेल्फिश कोन पाए टू सीक द हैप्पीनेस हमको सब बळे खुशी दरकार isn't it so life is not black and white the most difficult part in life is to choose or decide between two good things दीटा भलो जिंस अछि ता भितरु अधिक भलो कोटा किंबा दीटा खराब जिंस अछि ता भितरु कोटा कम खराब and that is what is the choice you need to make बुझी परछो चॉइस इनता गोटे जिंस तम पाखरे चॉइसेस थाई पारे न थाई भी पारे खाली नॉलेज आ विल पावर थिला हबनी चॉइस अछि कि नै तम पाखरे सेही सर्कमस्टेंसेस सहित तमे केते एक्वाइंटेड अछो let me give you an example suppose if you happen to be the BDO and तमे ऑफिस रे काम करूछ लेट्स से तमे जानिया को पाइलो कि गोटे बाली माफिया फॉर एग्जांपल से माने किसी दुष्कर्म करूचंती क्राइम करूचंती इलीगली से माने काम करूचंती सो तमरो नॉलेज अछि तमरो इच्छा शक्ति अछि बट व्हाट आर द चॉइसेस यू हैव सो एथिरे तम पाखरे दीटा चॉइस ईदर यू रिमेन साइलेंट तमे किछि भी एक्शंस नबनी किंबा यू टेक एक्शंस सो व्हेन नॉलेज combined with will combined with choice ए तीनटा जिंस जेतोले मिसि जीवो सेतोले कोन हबो ह्यूमन एक्शंस हबो ओके नाउ वर्तमान तमे मते पछरबे कि सर ह्यूमन एक्शंस त आपण कहि दिले बट एक्शंस को प्रकार एक्शन हबो इज इट अ पॉजिटिव एक्शन और इज इट अ नेगेटिव एक्शंस इज इट अ गुड एक्शन और इज इट अ बैड एक्शन एटा भी तो प्रश्न ओके एथिकल एक्शंस हमें काहा को कहिबा कोन सबु भलो जिंस एथिकल किबा सबु खराब जिंस कोन अनएथिकल बुझो ए जो दैट इज द रीजन आई वाज टिके पूर्व मु तुमको कहउतली कि लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट इट इज अ ग्रे एरिया तो जो मोमेंट रे तमे ग्रे एरिया जानिचो देखिबो बहुत किसी क्लियर हे जिवो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सपोज तमे समस्त जानिचो दैट सीरिया यू नो लेबनान ए सब एरिया रे पैलेस्टाइन ए सब एरिया रे कोन होछ आईएस बहुत एक्टिव अछि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सो आमो पाई टेरर व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म टेररिज्म रो अर्थ होची टू स्प्रेड टेरर आतंक भयभीत कराइबा लोकन को सिविलियंस को मारिबा ताको हम टेरर कहू तो टेरर गोटे भलो ना खराब ऑब्वियसली खराब जिंस यस एवरीबॉडी Yes, sir. खराब करेक्ट किंतु तमे जदी सेम प्रश्नटा यस करेक्ट एटा होती खराब जिंस किंतु सेम प्रश्न जदी तमे पचारिबो गोटे टेररिस्ट को सी याकू कोन कहइबो भलो कहइबो ना खराब कहइबो ଭଲ କହିବ भलो कहइबो काहे कि ना ता नजर रे एटा एथिकल मु काटा बुझी परछो सो इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव माइंडसेट किंतु एबे तमे नेक्स्ट प्रश्न पचारिबे सर ताले हम जानिबा केमती कि कोटा भलो कोटा खराब आमे जानिबा केमिति यार अर्थ होचे मेजॉरिटी कोन फॉलो करछन्ते मेजॉरिटी जदी गोटे स्टैंडर्ड करछन से माने कहउछन्ते कि नै एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म इज बैड देन इट हैज टू बी and जो actions of human if it goes against the actions of human killing a person is not an action of a human being so if it goes against the actions of human ethru ame kon janu che
that then this is not an ethical actions. This is not an ethical actions. So कहले मते कौन कौन तुमरो इंग्रेडिएंट अछि कि इंस्टेंसेस अछि जो गोटे ह्यूमन एक्शंस को इंप्लीमेंट कराए. व्हाट आर द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग? So knowledge, Knowledge, very good. willness, Will and choice. choice. Excellent. Knowledge, will and choice. এই তিনটা জিনিস কোন हुए तमर ह्यूमन एक्शंस को इंप्लीमेंट कराए. अच्छा एबे हमें इंप्लीमेंट कौन कराए सेटा तो हम जानिले, बट तुमको लागुनी कि एमती भी किसी किसी जिनिस थाई पारे जोटा कि ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करे. करेक्ट. ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करे माने गोटे एक्शंस नबा पूर्व मु नेबी ना नेबिनी नबा पाई तो हमें जानले तीनटा जिनिस दरकार. कोन? विल, नॉलेज, चॉइस. बट न नबा पाई व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स ऑफ ए ह्यूमन एक्शंस? Isn't it? तमे कहि पारे प्रथम जिंस इग्नोरेंस. इग्नोरेंस रो अर्थ कोन? तम पाखरे नॉलेज अछि बट यू आर इग्नोरेंट और यू आर ट्राइंग टू बी इग्नोरेंट. माने आमे ताको खामख्याल रे नै गले, आमे से सिचुएशन रो जटिलता में जानिलेनी, आमे बुझिया पई चेष्टा करलेनी. तो डेफिनेटली जेतेबेले हमर इग्नोरेंस अछि सेही समय रे जदी आमे कोनोसी प्रकार एक्शंस नबा से केबे भी पॉजिटिव रिजल्ट होबनी. हमको सब नेगेटिव रिजल्ट ही दबो. आ गोटे कोन होबो? पैशन. पैशन रो अर्थ कोन? what is the meaning of passion? एठी देखो एथिक्स रे पैशन रो अर्थ इन जनरल भी तमे पैशन काहा को कहो. आमे साधारणतः पैशन शब्दटा करियर रे यूज करू कि मु बहुत पैशनेट अछि ए जिंसटा करिया पई किबा गोटे हॉबी को आमे यूज करू. बट नॉर्मली जदी तमे देखिबो पैशन शब्दटा यूज कोठी करा जाय जो इट्स अ स्ट्रांग इमोशंस. जनक मध्य रे see we all are human beings and we have certain degree of emotions. किंतु जेमती फॉर एग्जांपल फियर, sympathy, honesty, anger, love, confusion, all of these things are emotions. And is it really possible that robot भले हमें मोड तो स्विच करि परिबानी? एबे तमे गोटे सिविल सर्वेंट हेइछ आउ तमर जदी घरे पर्सनल लाइफ रे बिल्कुल किसी ठीक चलेनी, इट्स नॉट पॉसिबल कि तमे प्रोफेशनल लाइफ रे बहुत भलो काम करिवो. सिमिलरली जदी प्रोफेशनल लाइफ रे तमरो कामरो जो जहा संस्था अछि किमा जोठी हम तमे काम करूछ जदी सेठी बिल्कुल भी ठीक चलेनी, पर्सनल लाइफ रे भी बिल्कुल ठीक होबनी. ओके. सो पैशन, स्ट्रांग इमोशंस ना, जेतबेले स्ट्रांग इमोशंस थाए सेतबेले कोन होए कि ह्यूमन एक्शंस डिफर करे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. तुम समझते जानिथिबो, आई थिंक ऑल ऑफ अस यूनानिमसली हम एग्री करिबा कि पेरेंट्स हमर जे पेरेंट्स माने थांती तांकर चाइल्ड से भूल केते भी करथिले से मन ताको के भी बाहर करिवे. इजंट इट? इट इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. तार अर्थ सेही समय रे तुम जदी देखिबो सेही समय रे जदी से छुआ भूल भी काम करि थाए तेबे भी सेठी एथिकल एक्शंस काहे कि हुएनी, बिकॉज इमोशन सेति की स्ट्रांग थाए. सो एमती प्रोफेशनल लाइफ हो किबा पर्सनल लाइफ हो तमे बहुत सारा मते लागु छी सिचुएशन फेस करिथिबो किबा आगु को करिवो जोथरे कि देयर इज अ स्ट्रांग इमोशंस. अब सेही समय रे प्रोबेबली एथिकल डिसीजन नबा बहुत कष्ट. मे बी तमे एथिकल डिसीजन न नै पारो. ओके. सो पैशन, इमोशंस इज अनदर थिंग. फियर, भय, फियर भी इज अनदर इम्पेडिमेंट. केमिति देखो सिविल सर्विसेज रे तमे स्टार्टिंग करिछ जर्नी, you know the biggest fear of life is fear to fail. The biggest fear of life. So that basically restricts us to take risk. हमको लागे जदि मु फेल हे जिबी, जदि मते मिलिबोनी, जदि मते मु पारिबिनी, एमति हजारटा क्वेश्चंस आसीबो. सो फियर गोटे बहुत बड़ एंगल रुहे जोथि पई कोन हुए ह्यूमन एक्शंस को हमें प्रॉपर्ली न नै पाउछ. सेमिति आउ कोन टेम्परामेंट. टेम्परामेंट रो अर्थ, what is the meaning of temperament? Anger.
टेम्परामेंट तुरंत रागी जीवा एंगर हैज नो सॉल्यूशंस तुम केते जस्टिफाई करो नो राग एमतिया गोटे जिंस मु सब बड़े गोटे जिंस कहे आई थिंक तुम तो एथिक्स रे एटा सेकंड क्लास ऑफलाइन रे हमर चली छी तो देयर आर सर्टेन सिचुएशन जो थ्री की डिसीजन नबा कथा अब सेटा कोन एक्सट्रीम लेवल ऑफ इमोशंस को भी प्रकार इमोशन नेवर टेक अ डिसीजन जदि एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस अछि किबा एक्सट्रीम लेवल ऑफ सैड अछि डिप्रेशन किबा सरो never take a decision maybe you should wait because सही समय रे कोन वे मु टिके पूर्व जोरा कहउतली इमोशन विल ओवरथ्रो द एथिकल डिलेमास सो टेम्परामेंट कोन साधारणतः सिविल सर्विसेज जीवन रे राग रे कोन से डिसीजन नबाटा बिल्कुल ठीक नुह जस्टिफाइड नुह इन पर्सनल स्फीयर एज वेल एज इन प्रोफेशनल स्फीयर एते क्लियर ऑल ऑफ यू Yes, sir. यस Yes, sir. चलो Yes, रेस्ट ऑफ द sir. स्टूडेंट्स क्लियर ठीक अछि देखो now there is a concept ethics मुटिके पूर्व तुम जो कहउतली ethics in personal relations and ethics in professional relations let us try to understand in personal relations what is the ethical dilemma for an example एबे गोटे एग्जांपल मु तुमको देली जेमति पेरेंट्स आउ ता चिल्ड्रन रो रिलेशनशिप ता चाइल्ड जेते भी भूल करू अल्टीमेटली ता तांको पई तांको छुआ बहुत बड़ ना तांको पई तांको छुआ बहुत बड़ सो सेही केस रे एथिक्स आउ सिटी काम करे बिल्कुल भी किंतु देयर आर सर्टेन सिचुएशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल जने डॉक्टर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जने रोगी अछंती से डॉक्टर पाखु गले एवं कहिले जे मोर ए रोग होईची मु पूर्वरु ए मेडिसिन मु खाउतले तो डॉक्टर को फील हला कि सी जहाँ भी करिसनी भूल करिसनी तो सही समय रे कौन ह्यूमन एक्शंस एक्सपेक्टेड अछि डेफिनेटली डॉक्टर रागिया कथा कि बिना पचारि कि तमे एमती सब काहे करछ रागिया कथा ठीक एसो नो Yes, sir. रागिया कथा तो डॉक्टर Yes. मानकर कोड ऑफ कंडक्ट अछि आईसीएमआर जोटा अछि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईएमए जोटा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मानकर किछि किछि प्रिंसिपल्स अछि कि सेमाने जेते भी जदी रोगी तांकर पर्सनल प्राइवेसी को केबे भी सेमाने क्वेश्चन करिया कथा ठीक तो डॉक्टर रो कर्तव्य होची से पूर्वरु कोन करूची ताकू न देखि कि आगु को कोन करा जीवो ताकू सेही वाला मेडिसिन दवा पड़िबो सो एटा कोन एथिकल डिलेमा तमरो इन प्राइवेट लाइफ कि डॉक्टर चाहू छी मु ताकू किछि कहया पे बट फिर भी तारो कर्तव्य आगर से सेटा करि पाउ सेही भलिया पब्लिक स्फीयर रे सपोज फॉर एग्जांपल यू आर अ पुलिस ऑफिसर तमे जने पुलिस ऑफिसर पुलिस कर्मचारी सेही समय रे गोटे लॉ अछि आ लॉ माध्यम रे तमरो ऊपर ऑफिसर कहिले कि ए लॉ को तमे इंप्लीमेंट करो ए लॉ को तमे इंप्लीमेंट करो किंतु कोठी ना कोठी तुमको निज पर्सनली फील होची कि नाही एटा भूल एटा तुमको पर्सनली फील होची पर लॉ रे लिखा है जी तो एथी एथिकल डिलेमा कोन मु तुमको टिके पूर्व कहउथि कि एवरीथिंग इज लीगल मे नॉट बी एथिकल आर गेटिंग माय पॉइंट तो सही समय रे तमे कोन करियो व्हाट आर द ऑप्शंस विथ यू कौन ऑप्शन से तुम पागे कहलो यू आर अ पुलिस ऑफिसर your your higher authority told you to implement a law which you personally feel not ethical what is the options do you have To कौन follow options the ଅଛି instruction of the senior. follow the instruction but तुमको लागु जे एटा ठीक न हो so definitely there are very few options left कौन number 1 either you resign Yes. तमे चाकरी छाड़ दी पळेबो because तम हिसाब रे तमे कहउछो जे नाइ it is against my principles so I will leave it किंबा simply you will follow the instructions because it is legal it is as per the law सर तो एठी कोन हायर ऑफिसर को हाँ कन्विंस कर पारे नहीं नै कन्विन्स रो सेठी मौका नै तुमको इंस्ट्रक्शंस मिलुची तमे थरे कहबो दिथर कहबो केथर तुम तो कहबो ताको कन्विन्स करबो बिकॉज़ हायर अथॉरिटी सी सो एठो हम कोन जानुचे व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि ह्यूमन एक्शन से तो हमें नौचे
ସେଥିରେ will, choice as well as କଣ will, choice, knowledge. knowledge ତିନିଟା ଜିନିଷର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ contribution ଅଛି